Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Dr. Bashir. Today we are having a second case of laparoscopic cholecystectomy for symptomatic gallstone. Actually, she is a 51-year-old female presented with pain in the right hypochondrium with the multiple times, and she was having acute cholecystitis. So we manage it conservatively and with the injection meropenem. So, despite waiting for the 4 weeks, we planned within a 1 week, and after injection meropenem, she is having a seems to be resolved cholecystitis. So today we have planned to do the laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis. And she was having deranged LFTs. So हमने after discussion with the gastroenterologist and opinion from the liver specialist, then after normalizing the liver function test with normal serum amylase and all that, now she is here for the lab chole. Voice check. एयरपोर्ट ला के ऑपरेशन कर रहे हैं लोगों ने. Hold it please. चलो ठीक है. Support पीछे करें. So umbilical port, epigastric, midclavicular, anterior axillary ports. So again the team is same. First of all, especially आप जब आपको लगे कि gut is close to the gall bladder, तो आप भी distance से इसको जो adrenalize करें, ताकि आपका thermal energy जो है वो उसका बचाव हो जाए, उससे आपको बचाव हो जाए. थोड़ी सी हमसे ये ग्रास्पर की इंजरी हुई, उसको हमने देखा. स्टाफ आगे पुल करें एंड टुवर्ड्स राइट शोल्डर. ठीक है, वेट प्लीज. मैरीलैंड यहाँ पर रखिए. होल्ड करें प्लीज. वैसे ग्रास्पर So यहाँ पे हमें revizius sulcus is not visible, so we should be very careful regarding the cystic duct and the CVD. So हम बहुत ऊपर से ही शुरू करेंगे. ठीक है, आगे हमें कुछ जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाए हम आगे मूव ना करें. ये पेट्रोनियम को आप सबसे पहले एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिफ्ट करेंगे तो आपको पैलेट्स ओपन होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही तो आप एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायसेक्शन स्टार्ट कर दें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी. As you can see that the visible lymph node and कैमरा मैन थोड़ा सा आज हमारा माठा है, शायद आज इसको चाय नहीं मिली, तो थोड़ा सा इमेज क्वालिटी हमारी चूँकि आईफोन 15 प्रो मैक्स से बना रहे होते हैं वीडियो, अभी हम इतने उस तरह से लेवल पे पहुंच नहीं पा रहे. तो इंशाल्लाह हम इसको भी अपग्रेड करेंगे ताकि हम आपको रियल टाइम वीडियोस जो है वो शो कर सकें कि रियल टाइम में ऑपरेशन कैसे हो रहा था और उसमें क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या इश्यूज आ रहे थे और हमने उसको कैसे मैनेज किया. लिटिल बिट हमारी यहाँ पे लग रहा है जैसे गाल ब्लैडर में हम जा रहे थे, मैंने फ़ौरन इसको रोक लिया. ठीक है, देयर इज सम स्टोन हियर एंड आई वुड लाइक टू डू. स्टाफ आगे पुश करें, आपकी ट्रैक्शन कम है. आप इस जो स्टाफ है, अगर आपको उसका थर्ड असिस्टेंट की ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं. ठीक है, या तो आप उसको प्रॉब्लम में डालें कि भाई सही से दिखाएं, ट्रैक्शन अच्छी करें, अदरवाइज आपका जो एनाटमी है उसको आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे. सो आई वुड लव टू डू मेक अ विंडो हियर.
نیکسٹ آپ دوبارہ ہولڈ کریں یہاں سے, چھوڑیں پلیز. پلیز ہولڈ اٹ فرام ہیئر. Can use Maryland as well, but I think so. Okay. ابھی بھی پیٹرونیل کورنگس ہیں جن کو ریموو ہونا بہت ضروری ہے, تو بٹ بائی بٹ آپ چلیں آرام سکون سے چلتے ہیں, ان شاء اللہ آپ کو کافی حد تک کلیئر ہو جائیں گی چیزیں. دا بیسک کنسیپٹ بیہائنڈ دیس میکنگ دیس ویڈیو از دیٹ کہ جو ہمارے پی ٹی آر ہیں جو تھرڈ ایئر فورتھ ایئر کے ہیں, اور وہ ڈیلی اپنے تھیٹر میں اس طرح سے اتنی ان کو چانسز نہیں ملتے. I was lucky enough کہ my worthy mentor Professor Sajid Sheikh صاحب, he provided us a very good opportunity to learn the lapro during my training period, and we started learning in the start of the third year of our training, and even he helped us to make availability of the laparoscopic system in the emergency of Allied Hospital Faisalabad. So سر کا بڑا احسان ہے جی ہم پہ, اور ہم آج بھی سر کے گن گاتے ہیں. تو آئی ہیو ڈن مور دین 100 لیپروسکوپک appendectomies in my training period, اینڈ یہاں پہ کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی پی ڈی آر جو ہے وہ اتنا کام کرے. آئی ہیو ڈن لیپروسکوپک duodenal ulcer perforation repair, done first time in the history of Allied Hospital by me. So, and we were having rotation in the theater main OT, where the cold list at every list we were having one PTR on rotation to learn the laparoscopic cholecystectomy under the supervision of Professor Sajid Sheikh sir. So that was his vision, that we are able to do and to perform all kind of cholecystectomies, appendectomies, cystectomies, which are the major portion of the general surgery. And here the purpose is that کہ جو سر نے جو ہمیں دیا ہے ہم آگے اس کو ٹرانسفر کریں انشاءاللہ. So we just have done more than 1,000 laparoscopic cholecystectomy here at Nigat Medical Complex in the last 2 years, alhamdulillah. And I have encountered only one case where I have to convert the lapro into open cholecystectomy, and she was having a mass. We tried 99.9% to complete the procedure laparoscopically, and using the hook. You know, it's all about your reflexes with the passage of time, and still I salute my professor for making me capable of these things. Otherwise, in training, to learn the lapro is a very difficult thing, because mostly the senior are interested to perform such surgeries. So thoda sa hamara clip slip hua, and later on we will inshallah properly wash the area, and these are the tiny gallstones. Ideally مجھے یہیں پہ کر لینا چاہیے, بیکاز کہ یہاں پہ لیور آپ کا بڑا وہ دے دیں. یو کین یوز دا 10 mm سکر. 10 mm سکر میں آپ کے سارے جو آ جائیں گے, اس میں سکر آن کروائیں گے اور فلوئڈ لگاؤ فلوئڈ ساتھ میں ہم واش بھی کر لیں گے. یہاں پہ چونکہ آپ کا ہم نے ٹریکشن لگائی ہوئی پتے کے ساتھ لگائیں, پلیز ٹچ کریں. پش کریں, یہاں پہ میں پہلے سیکشن کر لیں تو جتنے بھی ٹائنی اسٹونز ہیں یو کین آبزرو دیٹ کہ وہ سیکشن میں ہی آ جائیں گے. ٹھیک ہے, بعد میں آپ کو گال بلیڈر اس سے اسٹون گراسپر سے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس چکر کا یہ مسئلہ ہے, تھوڑا سا یہ فلوئڈ بعد میں چھوڑتا ہے.
सो मैंने इसको पहले टाइटली मैनेज कर लिया. नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट आवर फील्ड इज नीट एंड क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह. एंड जो प्रॉब्लम आया था हमने उसको टाइमली कंट्रोल कर लिया. एंड देयर आर बंच ऑफ स्टोन्स एज वेल प्रेजेंट. तो आपने इस मॉरिसन एरिया को ज़रूर अच्छे से तसल्ली से इसको करना है. पुश करें. वी आर हैविंग इरिगेशन सिस्टम दैट इज इंस्पायर्ड बाय यूरोलॉजिस्ट. तो हमने उसको पुश करें वाटर. हमने उसको ऑप्ट किया हुआ फॉर द लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर. तो इसमें हमें जो सलाइन है वो विद प्रेशर और विद गुड फ्लो हमें मिलती है, तो इससे हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है. लिटिल बिट टाइनी स्टोन्स है, वो इनको हम लेटर ऑन देखेंगे. लेट मी जस्ट रिमूव द स्पेसिमेन एंड कंप्लीट द प्रोसीजर. तो हर हर लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन. तो आप हर प्रोसीजर से बहुत कुछ सीखते हैं. होल्ड इट प्लीज. अगेन थोड़ा सा डायलेट कर लें, ज़्यादा ना करें. और ऑलरेडी हमारा गाल ब्लैडर जो है वो हमने इसको इसमें से सक्शन कर ली हुई है. और इस एरिया से हमारा क्लिप स्लिप हुआ था, इस वजह से हमारे स्टोन सारे बाहर आ गए थे. तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है. सो द स्टोन ये ऑलवेज बी, ये अगर वुंड में रह गए तो आपको वुंड सेप्सिस कर देंगे. नेक्स्ट थायराइड रेडी करें बच्चों. यस. सलाइन पुश करें. सलाइन पुश करें. सलाइन. Now I will change the 10 mm sucker to 5 mm. स्लाइन पुश करेंगे. हाँ जी, स्लाइन पुश करें शाबाश. 5 sucker. So don't ever forget to look after the procedure. And आपका सारा फोसा क्लिप्स एंड एवरीथिंग, कुछ भी आपका जो अगर है रिमेनिंग, आप उसको मैनेज कर सकते हैं टाइमली, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलता. सलाइन पुश करेंगे. So you can see our cystic duct, cystic artery, a little bit ooze from here. Is there any ooze? थोड़ा सा भी है, आप उसको टाइमली कोगुलेट कर लें, कॉटराइज कर लें. थोड़ा सा भी रिस्क ना लें. चल. And never become overconfident, especially in laparoscopic cholecystectomy. कुछ भी हो जाता है. Okay. So we are having a tiny stone. I would like to remove it with this grasp. So thank you so much for watching, and it's our second case today, and inshallah we will learn all kind of laparoscopic procedure from here inshallah. Wait, थोड़ा सा ये ब्रेक हो गया तो हम इसको वॉश करके सक्शन कर लेंगे. हाँ जी, रेडी है पेशेंट? हाँ जी. Thank you. The key points in this case were that she was having acute cholecystitis, and we managed it conservatively for just 1 week with the injection meropenem, and excellent result. And after 1 week, we planned for the laparoscopic cholecystectomy, and alhamdulillah, we have done this procedure within just 10 minutes. Thank you so much for watching Lapro Use. Thank you.